Odisha is a state with the highest number of tribal households. Highest proportion of the land is predominantly under rain-fed farming. Majority of the farmers are small and marginal in the state. Smallholders are the major food producers of the state. Government spending on agriculture from their agriculture budgets are not reaching the so-called smallholder. There are no mechanisms available within the government in delivering the available services to the farmers. Smallholders receive the lowest amount of credit support from the mainstream banking system in the state. Rice politics dominated the millets, and no support is available from the government for millet farming. Smallholders are made dependent on the external inputs for all their requirements. Costs of cultivation is increased. Farmers' net incomes are going down. CYSD, with the support of Oxfam India, initiated a project to demonstrate the sustainability of small and marginal farmers in tribal pockets of Koraput. Farmers are aggregated into farmer groups at the habitation level and further networked into their own federations. Farmers were given several trainings on ways of reducing their expenditure by adopting sustainable agriculture practices. CYSD is a leading civil society organization engaged in social development programs for more than 3 decades. In the process, many simple and innovative agricultural practices have been organized with the cooperation and participation and mobilization of farmers' communities, especially the women farmers. Incidentally, over a period of time, our efforts have been successful, and the women members of Koraput districts and other districts have acclaimed special awards and recognized by the national and international agencies for their involvement in agriculture and making abundant food production. The support of the Oxfam India and other mainstream government supports, we are basically aim to enable the small and marginal farmers to establish, to develop sustainable agriculture models and replicate the models in wider and enhance the production and productivity. Where water is the problem, a chain of farm ponds has been dug with the linkages through the government programs under watershed programs and National Rural Employment Guarantee Program. पनीपरिबा एबे कभी लगाउछु खत भी एबे हमरो कंपोस्ट खत तयार होईची जिया खत भी तार पई भी तयार होईची से खत आमे खिना औषध टिके कम करछु हमरो ये हमरो औषध का बेसी खत टिके देउछु. In Bipariguda, farmers enjoy having feast together due to a simple reason that the farmers take up community farming, grow vegetables, share their vegetables to each other, and sell the surplus in the nearby markets. The whole village is so confident that they can withstand any form of vulnerability. Today, the entire village is happy to be part of a sustainable agriculture program where they do not need to depend on external traders for their input. असुविधा ना आमर लोग आंध्र ओडिशा जाई करी मोरती लाए यहाँ कुली बुती जाई करी आमर खाई काम नहीं कुली नहीं बुती नहीं जाई करी सिटी आंध्र ओडिशा जाई करी कुली करती लाए ये भी नहीं क्या यहाँ हमें से गुस्ती चाष करी करी आमर पनीपरिबा
कि आमर धान मांडिया जेतकी अमल नाई कि आज्ञा आमे वर्षकु एबे 25,000 30,000 टांगा पाइलुनी से टांगा के नाई कि आज्ञा आमे पिला छुआ के मिसा पाठ पढ़ाई पारलुनी आरी आमर जोर दुखाइले मिसा आमे मेडिकल जाई पारलुनी नहीं कि 15टा मा ग्रुप करी आरी 2टा 3टा गांव के मिसाई करी आरी ग्रुप करी सेतकी गांव लगई खांगार पार गुम्मा गांव गतनगुड़ा मिसी करी आज्ञा आमे रास्ता घाट मिसा तैयार कलो आमी निजे निजे जाई करी माटी मारी करी रास्ता घाट तैयार कलो तबे डाक दर मिसा आसी फारला हमर गांव साइकल आइला मोटरसाइकल आइला गाड़ी मिसा आइला एबे नाई कि आज्ञा आमे सेंती से गुष्टी चाष मन करी करी एबे सिकी गलाई सब मिसा कलाइनी एबे लाभ बान आमे बेसी पाइलुनी जमीन आइला लोक मन नाई कि आज्ञा हमर 1 एकड़ 2 एकड़ जमी किनलाई कलोनी टमाट बैंगन कैसे कोबी भेंडी मूला बिनिस लगाइलुन लगाई करी कुंदरा सस्ता होला आगे तो कुंदरा नहीं तेरलु एबे ऑटो आइला निकिने एबे कैसे जयपुर ने लोनी मार्केट रे करी सस्ता होला बेले किलो बिक तेरलु 10 रेट होले 20 आरी अलग सस्ता होल तो 5 टाका के दे आइलुनी 5 टाका के दे आइलुनी एबे आमी फूल नेलुनी बिड़िया बांधी करी 5 टाका के 3टा रेट बेले 5 टाका के गोटे बिड़िया देलुनी फूल है ये तासी महिला में सब एंती पनीपरिया जिनस करी सब नेलुनी 10 जन 15 जन गोटे गोटे दिन के नेलुनी ऑटो भाड़ा कर 2टा ऑटो मन के गालुनी जाय करी जयपुर बिक्री कलुनी कुंदरा ना एबे जाऊँ दूरी होला एबे ऑटो होला आगे जयपुर आके नेलुनी आरी मुनिसिपला कोड़ की धारले माइकिना टकी एंती औषध दे कर पानी मोटर लगाई कर पानी दा कोड़ की साने बांधलुनी काराइलुनी आरी एबे फरासरो आज्ञा मनासी करे सब सिका पड़ा करे आम के कोई देलाइनी आगे तू आई ऊपर पानी आइतला टिके टिक करतलो एबे आज्ञा मनासी कर सब कोई देला के मोटर किणी करे निजे मोटर किणी करे गाड़ पाली पाली जाजू तास काम पाटा एंती पनीपरिया जिनस लगाइलुनी The farmer groups have reached to a situation where they demand their entitlements from the government programs like Rashtriya Krishi Vikas Yojana, RKVY, as they need. In the RKVY, different programs are being completed. Those are this organic farming, then this line sowing, line transplanting of paddy under bringing green revolution to Eastern India, and other factors like acid soil management and other aspects are also being covered. 60% of the population in Odisha is dependent on agriculture for their livelihoods, out of which more than 80% farmers are small and marginal farmers. So if we look at the issues of small and marginal farmers, it's mainly 3 things. One is they have very small landholding size. Second is they are dependent on rain for their agriculture, and third is the declining quality of the natural resource base, be it land or water. So these category of farmers are the worst affected in case of changing climatic conditions, and also due to the excessive use of chemical fertilizers and pesticides these days. So in this context, we in CYSD are trying to promote climate resilient models such as SRI, system of rice intensification, where the cost of production is low and also the productivity is higher. So from the same patch of land, the farmer gets a higher return, and also since the whole process is organic in nature, so it also helps in improving the quality of soil. हेले पुरु मुई जड़ी बेले धान मिडाली मोर धान मिडाला देखि कोरी पचे लोक मन जान लाई जे बोले से मन भाबी रहला दूरे दूरे रफी देला तो ये धान न है बोली कर जेमन विश्वास कर रहला से लोक मन जड़ी बेले मोर धान पाचलाटा देखला और मिडालाटा बिचा में पचारला जे धान केते खेला एलागोर धान अरे ये धाड़ी धान केत कर रियाटा हेलानी बोली कर से मन जड़ी बेले पचारला ते मुई कहले जे मुई सब बरस जेतकिला धान पचाइते रहली और धाड़ी धान कोला के मके तारटा नहीं 7-8 पोटी धान अधिक खेला पड़ला के हमरे वर्षे
तास कलेनी से आम्ही आग तो जेंती आले बुनथिलु जेंती आले रखथिलु सीधा पई ना एतिला दान एबे दाड़ी दान करी एबे आम्ही लाभ एलानी आम्ही सीधा 2 वर्ष लानी करी आइलुनी आम्ही एकर के 25 कुंटल आइलानी सेतकी पानी मिसा न रहिला पानी असुविधा रहिला एबे आमी ग्रुप घोड़ी करी बंद खोली करी आमी मोटर बसाई पानी आनी करी बेसी पाची पाचाइलु आज्ञा 2000 नले 1000 1500 एंती पाइतिरलु आगे तास काम बेले एबे 20000 25000 एंती सबु बेले पनी परिवार बाके पाची काम आइलु पैसा को घर कलु आरी से हल किनलु आरी पुओ पिला मन के पाठ पढ़ाइलु आरी टुकेल मन के खदी पाचुड़ी करी देलु ड्रेस फेरे सबू एंती करी करी पैसा आरी बाकी पैसा रखलु आमे आगतु बेसी असुविधा रहिलु तेबे खाइबा पाई बेसी असुविधा रहिलु तेबे प्रयास आज्ञा मन आइला खाइबा पाई असुविधा हला के नाय आमे गोटे शस्य पांटी गोटे करबा करू तार पछे शस्य पांटी कलु आमे शस्य पांटी ग्राम संगठन रे जमाई करी एबे शांति रे आछु आई खाइबा पाई असुविधा नै कि बियन बुणवा पाई असुविधा नै प्रयासर आगे मन आसी करी आमके सिखाइला एतकी आमे का साहुकार के मागु नै कि आमे भारे कि को बार साहुकार के मिसा मागु नै आमे भल रे चलुनी आमे एतकी कोई नमस्कार CYSD has a very strong focus on sustainable livelihood as part of its development program, and we operate in several districts of the state. The most important goal of CYSD is to ensure food security in areas where people have still a lot of problems around poverty and livelihood issues. For example, 5% cornot peats or 30 to 40% farm ponds. These are some of the wonderful experiments that we do there in the remote areas of Boiparigoda and Kundra blocks. One of the most important things for us now for the days to come is to engage more in tracking the agricultural budget of the government, and also linking up with let's say the livelihood mission or the RKVY activities there to bring more into the poor and vulnerable sections of the farming community there. CYSD initiative is a best example even for the government to deliver the customized services as required by the community.